Okay. So in last class, what we have discussed? We have discussed regarding the reciprocal space and the reciprocal lattice, right? And we had also seen that why actually we need the reciprocal space. What was the problem basically was creating in the real space? Okay, basically what problem we are facing while analyzing the crystal in the real space, so that we need the reciprocal space. ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर था सबका? सबको समझ में आया था अच्छे से? Yes, sir. Yes, Okay. sir. And at the end of the class, we have arrived on our 3 mathematical expression, like it was A star vector, and it was equals to B vector cross C vector divided by the A dot B cross C. Similarly, B star vector, okay, it was equals to what? C cross A divided by A dot B cross C. Okay, and similarly, the C star vector, and this was equal to A cross B, C star vector, it was equals to A cross B and divided by A dot B cross C. Okay, हम यहाँ तक पहुंच चुके थे. Now, if you see the dimension of A star, B star and C star, the dimension is what? Its dimension is 1 upon D. ये dimension है ना इसका? The dimension is 1 upon D, because in the numerator it is representing the area and in denominator it is representing the volume. So meter square divided by meter cube, that is 1 upon meter. Okay, so if we go to the dimensional wise, we have arrived on our conclusion. हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है. Basically what we needed a factor which increases on decreasing the interplanar spacing. Okay, interplanar spacing को कम करने से कोई एक फैक्टर हमें चाहिए था जो इंक्रीज करे, right? So basically we have arrived on our conclusion, but there is some missing thing here. Okay, there is something is missing, and the thing is, see, if we see the A star vector, okay, if we see the A star vector, as I told you, its dimension is what? 1 upon D, that is 1 upon meter. So we know that meter is a unit of wavelength. If we go for this, basically it is a 1 upon lambda. But 1 upon lambda is not defining any physical quantity. भाई 1 upon lambda आपने किसी भी physical quantity को सुना है 1 upon lambda something? नहीं. But if we multiply this by 2 pi, if we multiply this by 2 pi, then it will become 2 pi by lambda, and 2 pi by lambda is equal to what? Wave vector. Wave vector. Okay, that is k. K को represent करते हैं ना, k is equal to 2 pi by lambda, and that's why we can say we have just converted our discussion from real space to reciprocal space. और इसको समझने का जो दूसरा तरीका है वो ये भी हो सकता है that while studying the periodic crystal, we just multiply with a factor of 2 pi. Okay, we just multiply it with a factor of 2 pi. So in each relation, in each expression, we will multiply with a factor of 2 pi. So at last, we conclude. Hello? Yes, anything? Problem? हाँ सर. हाँ बताओ. डायमेंशंस लेकिन 1 मीटर ही रह रहे हैं ना? देखो डायमेंशन 1 अपॉन मीटर ही है, बट 1 अपॉन मीटर क्या कोई आपको फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहा है? नहीं ना. बट अगर हम उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते तो हमें वेव वेक्टर हमारा मिल जाता है. So that's the reason, and that's the basic reason. That's why we multiply with the 2 pi. And also,
in the second way of thinking that for studying the periodic crystal we just multiply with the factor of 2 pi. बस यही एक रीजन है कि इससे क्या होता है ना, इससे हमारा पूरी तरह से हम रियल स्पेस से रेसिप्रोकल स्पेस में चले जाते हैं. ठीक है, ओके. सो द A star, Yes, sir. finally we are getting A star as 2 pi B cross C divided by A dot B cross C. Okay. Similarly, B vector star is equals to 2 Excuse pi. me, sir. सर Yes. ये जो 2 पाई आया है, एक बार ये थोड़ा सर ये क्लियर नहीं हुआ कि ये 2 पाई कैसे आया. आपने क्या अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्या? यस सर. ओके. Yes, sir. इसीलिए. सी, वी हैव डिस्कस दिस. ओके, हमने डिस्कस किया है कि ये 2 पाई कैसे आया है. बेसिकली आई टोल्ड, एक मिनट मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ. इज A क्रॉस B and divided by A dot B cross C. Okay. So what I told that A star, B star and C star is basically representing dimension of 1 by D or 1 by meter, you can say. भाई 1 by meter का ही dimension represent कर रहा है ना. In the numerator it is area and the denominator it is meter cube. So basically it is dimension of 1 upon meter. Okay. When it was seen that we got that basically it is a dimension of 1 upon lambda. Okay, 1 upon lambda का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 पाई का फैक्टर क्यों आया है. ठीक है ना. 1 अपॉन लैम्डा का फैक्टर हमें कुछ दिख रहा है क्योंकि भाई मीटर जो यूनिट होती है वो वेवलेंथ की भी होती है. तो ये दिमाग में सोचा गया, साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम इसको 2 पाई के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, इफ वी मल्टीप्लाई विद द फैक्टर ऑफ 2 पाई देन इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, 2 पाई बाय लैम्डा. एंड 2 पाई बाय लैम्डा रिप्रेजेंट व्हिच फिजिकल क्वांटिटी, वेव वेक्टर. ओके, basically it deals with the wave vector and we know that wave vector basically corresponding to the momentum space. Okay, और इसको सोचने का दूसरा तरीका ये भी है that for the study of periodic crystal की जब हम स्टडी करते हैं तो एक पीरियड that is 2 पाई, उस पीरियोडिक क्रिस्टल की स्टडी के लिए जस्ट हम 2 पाई का फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मैंने ये बताया था. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. Okay. So finally, we got our 3 relation. Please write down everyone these 3 relation. अब हमें बेसिकली इन्हीं 3 रिलेशंस पर बात करनी है आज की क्लास में एटलीस्ट. ओके, these 3 mathematical relation we have got. Okay. So first thing, आज हम क्या करने वाले हैं उसको देख लेते हैं. With the use of these 3 reciprocal lattice vectors, we are going to find that what happens in a simple cubic lattice, what happen in a body centered cubic lattice, and also what happen in the face centered cubic lattice. इन तीनों क्रिस्टल लैटिस में अगर हम इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं देन बेसिकली व्हाट वी विल गेट एंड वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ओवर देयर. ओके, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा that with the help of these 3 reciprocal lattice vector expression, the maximum time of question which has been asked in a numerous examination has solved by these 3 expression. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या सिर्फ फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. किसी भी बट ए बी सी व्हाट, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज बेसिकली अवर रियल लैटिस वेक्टर. ये हमारे क्या है, रियल लैटिस वेक्टर है. एंड with the help of these real lattice vector we are going to find our reciprocal lattice vectors. So in the examination multiple times the question has been asked that the in the real space or the direct lattice vector is given as a vector like this, b vector like this, a vector like this. Find out the reciprocal lattice vector. So basically what you have to do, you have to use these three expression. Clear है? आगे बढ़े? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now please write down the heading reciprocal lattice vector for simple cubic lattice. Reciprocal lattice vector for the simple cubic lattice. Reciprocal lattice vector for the simple cubic lattice.
First, in this corner, I'm going to write this expression. A star is what? 2 pi B cross C upon A dot. सर Yes. सर अभी आपने कौन सा टॉपिक करा? एक्चुअली अभी हम थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से. Basically, till this time, we have just discussed why we include the factor of 2 pi. That's it. हमने 2 Okay. pi का फैक्टर क्यों इंक्लूड किया है, बस हमने इसको डिस्कस किया. ओके ओके सर. ओके मैं आपको ये बता दूंगा. आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे एक बार कांटेक्ट करना. मैं आपको मैसेज पे इस चीज का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. ओके ओके सर. थैंक यू. 2 pi C cross A and divided by A dot B cross C. And that was C star. It was 2 pi A cross B divided by A dot B cross C. Clear? Now, let's start with a simple cubic lattice or simple cubic structure, and the heading will be reciprocal reciprocal lattice vector for simple cubic structure. For the simple cubic structure. Okay, so for that we are going to draw a simple cubic lattice first here. This is our simple cubic lattice. Obviously, 8 atoms present at each corner. Okay, let's suppose this is our y-axis, this is our x-axis, and this is our z-axis. Okay, and let's suppose the side of the cube is A. Side of the cube is A. Okay, if I ask you what, let's suppose this is our origin. If I ask you what will be the direct lattice vector or primitive lattice vector of this unit cell, क्या होगा? हमने डिस्कस किया था ना. एक बार से बार A vector is equals to AI cap. AI. Okay. B vector is equals to AJ cap, ये क्या? and C vector is equals to ये क्या? AK का. AK cap. So this is basically our primitive lattice vector or direct lattice vector. So we have got our ABC, and with the help of this A vector, B vector, and C vector, we are going to find the A star, B star, and C star. अच्छा, ये आया कैसे है सबको पता है ना? Basically, just consider a origin and search out for the nearest neighbor. Again, search out for the nearest neighbor. इसका nearest neighbor कौन सा होगा? A distance पर ही होगा ना? ऐसा नहीं है कि ऐसा random A distance पर हमने इसको ले लिया, नहीं. Just search out for the nearest neighbor, and their nearest neighbor at a distance A. So, with the help of these three nearest neighbor, we are going to write the three direct lattice vectors. ठीक है ना? A vector एक x cap की direction में लिखेंगे. Obviously, it will be AI cap. One will be written in the y cap direction, that is AJ cap, and one will be written in the z cap direction, that is AK cap, because we need three direct lattice vectors. Clear है? Okay. Yes, sir. Now, just use these three lattice vector and find out A star, B star, and C star. Please solve everyone on their copy. And I'm solving here. A is AI cap, B is AJ cap, and C is AK cap. Now, first of all, find the A dot B cross C, because it's common in all three. First of all, find A dot B cross C. What is the value of A dot B cross C? Let's find out. A. B cross C will be what? I cap, J cap, K cap. I'm solving completely. Okay. मैं पूरी तरह thoroughly solve कर रहा हूँ. अगर किसी को problem है, वो यहाँ से समझ सकता है. B cross C आप निकाल लो. What will the value of B cross C? It will be 0, A, 0, 0, 0, A. Okay. And you will get basically what? A square I cap. Okay. You will get a square I cap. And similarly,
will you take a dot product with A, that is A dot B cross C, what you will get? AI cap with a dot product of A square I dot I is 1, and it will be A cube. If you And obviously, we all know that is representing what? Volume. volume cell. Volume of the unit cell. इसको A cube तो आना ही था. That is A cube. Okay. Now, similarly, we'll find the C cross A and we'll find the A cross B and we will put in that expression. इसको मैं आगे बढ़ाऊं, रब कर दूं. Clear है सबको ये? Everyone, किसी कोई problem? No, sir. Yes. sir. No, sir. रब कर दूं? Okay. Yes, sir. Okay. So basically what we got A dot B cross C is equals to A cube is equal to A cube, and B cross C, this we got as A square I cap. Similarly, when you solve C cross A and A cross B, what you will get? Please tell anyone what you will get. When you solve C cross A, what you will get? A A square. J cap. A square J cap and A A square square K cap. A cap. K cap. Clear है? For the simple cubic, हमेशा ध्यान रखना, for the simple cubic, is a A star direction ना, तो इसका जो direction होगा वो I cap के ही along होगा. Okay? And similarly, for the B star, the direction will be along J cap, and for the C star, direction will be along K cap. Clear है? Now, we have got all the value, just put on this expression. Let's see what you will get. See, first, A star. What we will get as A star? That is 2 pi 2 pi A square by A cube I cap. B star is equals to 2 pi A square by A cube J cap, and C star is equal to 2 pi A square by A cube K cap. Okay, that is 2 pi by A I cap, 2 pi by A J cap, and 2 pi by A K cap. 2 pi by A K cap. Okay, that's what we got as our reciprocal lattice vector. And this is what? This is our reciprocal lattice vector. ठीक है, यहां तक आप सॉल्व करो, फिर आगे बात करते हैं इसके. हो जाएगा तो बताना. हो गया? लिख लो सब लोग. Done? Completed everyone? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So just analyze these three lattice vectors. What you are getting? A star को अगर आप analyze कर रहे हो, basically what you are getting. This was, what are the direct lattice vector in the simple cubic? AI cap, yes sir. Yes, sir. AI cap, Yes. and you are getting A star as just 1 upon AI cap. अगर 2 pi के factor को 2 मिनट के लिए side करो, we are getting 1 upon AI cap. Okay? Yes, sir. That the vector was AI cap has converted into 1 upon AI cap. कोई और changes हुआ है? Direction का कोई changes हुआ है? नहीं हुआ है. No sir. Okay, the direction is exactly the I cap. That was the direction for the direct lattice. And similarly goes for the B star and C star also. It will be C star. Similar goes for the B star and C star also. In the B, for the direct lattice vector, what was the B vector? AJ cap. And what you are getting? 1 upon AJ cap. For the C vector, what was the direct lattice vector? AK cap. And here we are getting 1 upon AK cap. Okay. So it implies that the reciprocal lattice vector of simple cubic is what? Simple Also cubic simple itself. cubic. Simple cubic का simple cubic ही होता है. If you are taking the direct lattice vector of the simple cubic, and with the help of those vectors, the reciprocal lattice which we will get, that reciprocal lattice vector which also shows us the what? Simple cubic system. Okay, and that's why it is also called the what? Self-reciprocal lattice. It is also called self-reciprocal.
ये खुद का ही रेसिप्रोकल होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ रेसिप्रोकल लैटिस। बट बीसीसी एफसीसी में ऐसा नहीं होता है। ओके, आपने पढ़ा भी होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। अभी तक तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज चल रही है। लास्ट क्लास में जो था वो थोड़ा सा अलग था कि भाई हमें जनरली पता नहीं होता है दैट व्हाई वी नीड द बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ओके, बट ये चीज तो आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी। सो BC simple cubic lattice is a self-reciprocal lattice. Okay, and if you talk about the volume of the reciprocal lattice unit cell, भाई इन तीन जो है reciprocal lattice vector से with the help of these three lattice vector, reciprocal lattice vector, we will get a unit cell. Okay, just think about the direct lattice. Direct lattice में क्या कर रहे थे? A vector is equals to AI cap, B vector is equals to AJ cap, C vector is equal to AK cap. With the help of that three lattice vector, we are getting a unit cell ना? हमें एक unit cell मिल रहा था ना simple cubic का. Similarly, with the help of these three vectors, we'll also get the unit cell. But this time, it will be in a reciprocal space, and it will be called the reciprocal unit cell, which has been formed by the reciprocal lattice vector. And if you talk about the what will the volume of the reciprocal lattice unit cell, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, कितना आएगा वॉल्यूम? हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम? 8 sir. 8 pi q divided by a q। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, कैसे निकालेंगे? सर जैसे नॉर्मल पहले निकाले थे Yes, वैसे ही। बिल्कुल थ्री जैसे वेक्टर्स का बॉक्स। exactly, जैसे या हम निकाले थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। या और भी सर निकाल सकते हैं, एन इफेक्टिव निकाल के और प्रिमिटिव निकाल के उससे डिवाइड करके Yes, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल 2 पाई के मल्टीप्लाई करके निकाल सकते एग्जैक्टली, दैट्स आल्सो वी कैन डू। बट सिंपल वे इज, भाई वॉल्यूम जब तीन वेक्टर्स आपको दिए होते हैं, हाउ विल फाइंड द वॉल्यूम? A डॉट B क्रॉस C, सिंपल। ओके, सो हियर यू कैन आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेसिप्रोकल unit cell with the help of A star, B star and C star, and it will implies as, ये हो गया ना सबका? आगे बढ़े, इसको ये हो गया? Yes हैं। sir. यस सर। Okay, so simply you can find volume. I'm representing that the VR, okay, it stands for the volume of reciprocal unit cell, and it will be A vector star dot of B vector star and C vector star. Okay, and when you will solve this, you will get 2 pi by A whole cube. यही मिलेगा ना? हाँ सर। 2 pi by A whole cube. ओके, मैं इसको ओपन करके नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना तो ये अभी देखना बीसीसी और एफसीसी के पैटर्न में कुछ एक चीज, मतलब in the simple cubic, in the body centered cubic and in the face centered cubic, you will get a pattern for the volume. That's why I'm writing like this, not writing 8 pi cube upon A cube. Okay, so the volume of reciprocal unit cell for the simple cubic is 2 pi by A whole cube. Clear है सबको? Yes sir. ठीक है? Okay, now let's talk about the body centered cubic or body centered crystal structure. Okay, the second one is body centered, oh sorry, reciprocal lattice vector, reciprocal lattice vector in BCC or in body centered cubic. body centered cubic. ठीक है ना? इस डायग्राम को ऐसे ही बना रहने देते हैं. ओके, सो बेसिकली व्हाट विल वी चेंज? क्या बदलाव होगा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में? वन एटम विल बी एक प्रेजेंट एट एटम द सेंटर में आ जाए। बॉडी सेंटर पे आ जाएगा. गुड. ओके, बट अगर हम इसको कुछ इस तरह बनाते हैं, लाइक प्लीज ड्रॉ एवरीवन विद मी. आप लोग इसको ड्रॉ करो, ठीक है? थोड़ा सा आसान रहेगा.
and one more cube I will make here, and it will be like this. Okay, सही बन रहा है? Yes. ठीक है ना? ऐसे करके आप एक 3 क्यूब का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है ना? बेसिकली व्हाट इज व्हाट? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्यूब्स। 3 क्यूब को हमने कुछ ऐसे रखा हुआ है। एंड टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन। Take this point O as your origin. Okay. And what we are taking? This as a y cap. This as our x cap. And this is our z cap. ठीक है? And we don't need to bother with the atom present at the corner. What we basically need here, just the atom present at the body center. तो हम बस उसको ड्रॉ करेंगे। बाकी जो कॉर्नर पे एटम्स रखे हैं हमें उससे कुछ भी ज्यादा मतलब नहीं है इस केस में। One atom here, one atom here, and one atom here. Clear है? Okay. Can anyone tell what are the coordinates of these 3 atoms? First of all, tell me what are the coordinates of these atom? This atom for downward. 1/2 क्या होगा इसका 1/2 coordinate? -1/2, -1/2, and 1/2. 2 माइनस आएंगे। Are you sure? A/2 एक तीन माइनस आएगा माइनस सर, हाँ? एक माइनस माइनस आएगा सर आएगा। नीचे की तरफ की वजह से। यस सर, जेड कैप वाली डायरेक्शन। जो मैंने एक्सिस बनाया आप वही एक्सिस बनाना, वरना फिर चेंज हो जाएगा। याद है ना मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट जेड बताया था? कैप सिर्फ y कैप, नेगेटिव आएगा। इसको y कैप रखना, इसको x कैप और इसको z कैप। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एटम विल बी व्हाट? z वाला जो होगा बस o माइनस में जाएगा। ठीक है ना? और बाकी के दोनों कैसे होंगे? प्लस में होंगे। दैट इज व्हाट? a/2 एंड -a/2। एग्रीड? यस सर। यस सर। ओके। सिमिलरली टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एटम? इस एटम का कोऑर्डिनेट कितना होगा? -a/2 a/2 A/2 A/2। यस एग्जैक्टली, माइनस a/2 a/2 and a/2। and what is the coordinate of this atom? a/2 -a/2 plus a/2। Good. a/2 minus a/2 and plus a/2। Sir, Yes. sir, my internet connection was slow. Can you please say how we get minus books? How did we get what? Minus A/2. Basically, I'm writing down the coordinate of this point of this atom. I have defined the y-axis, z-axis, and x-axis. Okay. Sir. So while reaching, and this atom we are treating at our origin. Okay. So आप मुझे बताओ, आपको यहां से लेके यहां पहुंचना है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? आपको कैसे ट्रेवल करना पड़ेगा? हाफ ऑफ द x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में आप हाफ आओगे, Yeah. y डायरेक्शन में हाफ जाओगे, प्लस y डायरेक्शन में, और फिर माइनस z डायरेक्शन X में direction. जाओगे। यस। नो, दिस इज अवर x डायरेक्शन। प्लीज लुक एट द Yes. एक्सिस। आप इस एक्सिस Yes, को sir. फॉलो करो, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लीज फॉलो करो। ठीक है ना? Yes, sir. आप इंडिपेंडेंट हो, आप ले सकते हो, बट फिर Yes, sir. आपके कोऑर्डिनेट और मेरे कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आ जाएगा। Now I get it, sir. यू गेट इट? ओके। Yes, sir. So this is basically our 3 coordinate। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम सबसे पहले अपने 3 डायरेक्ट लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? बेसिकली वी नीड आवर 3 डायरेक्ट लैटिस वेक्टर और प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स। अच्छा, तो मैंने क्या किया है, मैंने 3 एटम पास के कंसीडर कर लिए हैं। वी हैव कंसीडर the 3 nearest atom. Obviously it will be total 8 nearest neighbor, right? BCC के nearest neighbor कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं ना? So but we need Yes, only sir. 3 atoms. But हमें सिर्फ 3 atoms की जरूरत है just for defining the 3 different vectors. Okay? आप अगर चाहो तो आप किसी और को भी ले सकते हो। Okay? जैसे आप सोच रहे होगे सर क्या हम -a/2 -a/2 a/2 नहीं ले सकते? यस, ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। एक बार करके देखना। And their respective transformation which you will get in the reciprocal lattice will also be changed. But
दिस इज एक्चुअली द बेसिक एंड स्टैंडर्ड वे। भाई जितनी भी बुक्स में आप देखते हो, आप जितनी बुक्स देखोगे, जो भी मतलब बेस्ट से बेस्ट बुक, चार्ल्स किटल, एम ए वहाब, दे ओनली टेक दीज 3 कोऑर्डिनेट्स। दैट्स व्हाई आई एम आल्सो टेकिंग द दीज 3 कोऑर्डिनेट्स, जिससे कि थोड़ा सा ना रिजेम्बलेंस बना रहे। ओके, सो बेसिकली व्हाट विल बी अवर डायरेक्ट लैटिस वेक्टर और प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर? क्या होगा? कोऑर्डिनेट तो हमने डिफाइन ही कर दिया है। ओके, सो व्हाट विल बी अवर डायरेक्ट लैटिस वेक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर A/2 I cap plus J cap minus K cap. एग्जैक्टली a/2 कॉमन I cap plus J cap minus K cap. We are considering this atom. For the B vector क्या होगा? A/2 minus I cap plus J cap plus K cap. a/2 minus I cap plus J cap and plus K cap. And similarly, the C vector will be is equals to a/2 I cap minus K cap plus I K cap. cap minus J cap plus K cap. ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था? ये 3 क्यूब क्यों बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था जिससे कि पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द 3 डायरेक्ट लैटिस। हाँ यस। सर, सर एक डाउट है सर, जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स को रिस्पेक्टिवली एक्स वाई एंड जेड के लिए लिखे, और आपने जो लैटिस वेक्टर लिखा है उसमें आपने जेड का बी के लिए लिख दिया है ना? सॉरी, जेड का क्या किया है? सर जो हमारा जेड के कोऑर्डिनेट्स है उसको आपने बी वेक्टर का लिख दिया है, देख लीजिए एक बार वो। नहीं, दिस इज अवर बी कैप, दिस इज अवर बी वेक्टर डायरेक्शन, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। ठीक है ना? मैंने क्या कहा, आप लैटिस वेक्टर अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। ओके, आप लैटिस वेक्टर अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। भाई इसको ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? एक वाई डायरेक्शन में जाएगा, ये जेड में जाएगा और ये एक्स में आएगा, इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख लिया है। ठीक है ना? ओके सर। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्ट लैटिस वेक्टर फाइंड आउट द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। एवरीवन, सब लोग फाइंड करो। जस्ट टेक अ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी लेना है लो। देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द बी क्रॉस सी। दिख रहा है? और थोड़ा नीचे कर देते हैं। बी क्रॉस सी, that will be I cap, J cap, K cap. B cross A means A/2 in minus A/2 and A/2. Similarly, it will be A/2 minus A/2 and plus A/2. इसको हटा दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें हटा दो इसको। Yes, sir. Now, so the B cross C, this will be what? I cap A square by 4 plus A square by 4. Okay? Now, minus J cap, and it will be minus A square by 4 minus A square by 4. And the K cap, it will be A square by 4 and minus A square by 4. So this term is 0, and from here you will get what? Simply B cross C you will get as A square by 2 I cap plus A square by 2 J cap. Okay, plus A square by 2 J cap. Clear है सबको? यही मिलेगा, A square by 2 I cap plus A square by 2 J cap. And you will take a dot product with the A के साथ जो dot product लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? I dot I1, and that is A cube by 4, I dot J 0, I dot K 0, right? Z dot I 0, Z dot J 1, and that will be A cube by 4, and J dot K will also 0, and hence the A dot B cross C, this will be what? A cube by 2. A cube by 2. A cube by 2. Now find out everyone C cross A and A cross B. C cross A and A cross B. Find करो सब लोग.
and tell me, I'm not going to solve all the cross product. बस एक दो कर दिया है, अब ये तो करने की जरूरत थोड़ी ना है. Tell me, what is the A star coming? A star कितना आ रहा है? तो 2 पाई बाई ए आई कैप प्लस जी कैप. 2 पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप. क्या सब लोग को ये फाइंड आउट हो रहा है? सब लोग निकाल पा रहे हो? यस सर. प्लीज रिस्पॉन्स एवरीवन, तभी मुझे पता चलेगा क्या चल रहा है. ओके, Yes. Find out. यस. Yes, sir. A star is equals to 2 pi by a what? I cap plus j cap. Similarly, B star कितना होगा? 2 पाई बाई ए जी कैप प्लस के कैप. 2 pi by a जी कैप प्लस के कैप. j cap plus k cap. Yes, exactly. J cap plus k cap, and C star will be 2 pi by a ij हो गया, j k हो गया, k plus जी कैप प्लस आई कैप. k cap plus I cap. So this is our 3 reciprocal lattice vector for the body centered cubic lattice. Okay? ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. जब हम अभी फेस सेंटर्ड करेंगे ना, आज या कल जब भी करेंगे, the direct lattice vector which will get in the face centered cubic, वो भी ऐसे ही होगा. ये इसी तरह आएगा. फेस सेंटर्ड की बात कर रहा हूं. The face centered in a face centered cubic, the direct lattice vector will be this one. और बॉडी सेंटर्ड में क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आ रहा है. समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? That means the reciprocal lattice vector of BCC is the direct lattice vector of the FCC. Okay? So इसको एक लाइन में हम ये भी कहते हैं, आपने फेमस है सुना होगा, that the reciprocal unit cell of BCC is FCC. BCC का जो रेसिप्रोकल होता है वो FCC होता है. ओके? अभी ये क्लियर नहीं होगा ऑब्वियसली, अभी जब FCC दिखाएंगे ना फिर वहां पर ये क्लियर हो जाएगा. There the direct lattice vector which you will get will be exactly same as reciprocal lattice vector of BCC. और एक बात, जो FCC का reciprocal lattice vector होगा, that reciprocal lattice will be the BCC का direct lattice vector होगा. Okay? So the conclusion is the reciprocal lattice vector or reciprocal lattice of simple cubic unit is simple cubic. Reciprocal of BCC is FCC. And reciprocal of FCC is BCC. Clear hai? Now, tell me the volume of this reciprocal unit cell. What will be the volume of this reciprocal unit cell? Please find out everyone. Just take a cross product B cross C with a dot product of A star. करो देखो कितना आ रहा है. What will 2 pi by a के ए 2 बाई 4 सर. volume? I am writing here. Volume of reciprocal lattice VR कितना आ रहा है? क्या ये आ रहा है? Is this coming Sir, 2 multiplied by 2 pi by a whole cube? Yes, sir. क्या यही आ रहा है? Yes. Everyone getting the same? yes sir. sir, we are fine. You're not getting? वो सर निकाल रहे हैं. I don't understand. What are you saying? Please say again. Sir, calculating answer. Okay. Please do. You will get the exactly same expression. Okay. And in the simple cubic, what we got? Simple cubic में क्या मिला था? We got AR of simple cubic was 2 pi by a whole cube. ये मिला था ना? Yes. Okay. एक बार वो लिख लें फिर मैं आगे बात करता हूँ. FCC तो आज नहीं हो पाएगा. हो गया आपका? The student which was writing? Have you written? Yes, sir. Have you written? Yes. Okay. Now, I told you why I'm writing this as 2 pi by a whole cube. There's some pattern. Just see this one. VR of simple cubic. Can we write is add n effective into 2 pi by a whole cube? Can we write is that like that? Yes, sir. Yes, sir. भाई यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई है? 1 से मल्टीप्लाई है.
and the effective number of atom in the simple cubic is what? 1. 1. Okay. Yes. And here किससे multiply है? 2. 2 से multiply है, and the effective number of atom in the BCC is 2. 2. Okay. So in a direct, अगर जैसे कि मान लो direct question आ गया, direct question that what will be the volume of reciprocal unit cell in the BCC. So whether there's a first thing, just go to all the vectors, find out each reciprocal lattice vector and just find out the volume. And the second one is just use this relation. It's not a simple cubic. Just use this relation, that is V of R, that is a volume of reciprocal unit cell will be the n effective times 2 pi by a whole cube. First, this is generally means valid or satisfy for the orthogonal lattice, like simple cubic, BCC and FCC. इनके लिए ही होगा, ठीक है ना? Obviously यही 3 हमारे सिलेबस में भी हैं, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं. Okay, so if we talk about the simple cubic, we are getting n effective is 1 and 2 pi by a whole cube. And if you talk about the BCC, what we are getting? For the BCC, we are getting 2 into VR, actually VR of SC. I'm writing this like that. VR of simple cubic is equals to 1 multiplied by this, and VR of BCC is equals to 2 multiplied by 2 pi by a whole cube. Clear hai? And similarly, you will see that VR of FCC will be equal to what? 4 into 2 pi by a whole cube. जो FCC का जो reciprocal volume आएगा unit cell का, that will be 4 multiplied by 2 pi by a whole cube. Okay, so let's stop here because your next class is waiting, and tomorrow we will first complete the FCC lattice, then we will do some question and we will just continue the discussion. अभी बस 1-2 class और लगेगा, most probably tomorrow and day after tomorrow, and your crystallography will be over. Okay? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Okay. So let's see you tomorrow, guys. Thank you, sir. Yes, yes. Thank Yes. you, sir. Thank you, sir. Thank you. हाँ हाँ बताओ. सर मेरा एक सिली सा डाउट है कि जैसे कि हम ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो बीसीसी की, इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा ना, ए कंजुगेट और पी क्रॉस सी. वॉल्यूम अगर आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, जी सर. लेट्स सपोज पैरेलल पाइपेड है और उसके 3 साइड 3 वेक्टर के फॉर्म में आपको दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है जस्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम. कुछ भी हो, रेसिप्रोकल स्पेस हो, डायरेक्ट स्पेस हो, you have to just need to A dot P cross C. Entirely you will get a volume. सर इसमें जो हमें ठीक है सर, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी ना इसमें? Obviously, A dot B cross C means what? A vector dot B vector cross C vector. B vector और C vector का आप कर्ल लोगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, और जो आएगा उसको A vector के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे. थैंक यू सर. भाई अगर आप इसको ऐसे सोचो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ फिजिकली. देखो, लेट्स सपोज दिस इज आवर एरिया एंड दिस इज हाइट. ये कोई हमारा मान लो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, ये कोई हमारा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है. दिस इज आवर एरिया ऑफ बेस एंड दिस इज हाइट. अरे एससीपी को एज्यूम कर लो, हेक्सागोनल क्लोज पैक जो हमने किया था. सो हम क्या करते हैं, कर्ल लेते हैं. कर्ल मीन्स एरिया, इनका कर्ल ले लो, ठीक है ना. इट विल रिप्रेजेंटेड योर एरिया कर्ल B cross C, and just take a dot product with the A and you will get a complete volume. Okay, that is A dot B cross C will give you the volume. Clear hai? Yes sir. Thank you sir. Okay, see you. Thank you. सर. Yes, सर वो 2 पाई वाला आप हमें व्हाट्सएप पे बता देंगे या अभी बता देंगे, वो कैसे? ठीक है, आप रुको मैं बता देता हूँ. हम्म. किसी को एग्जिट करना है कर ले, बिकॉज सबको बता चुका हूँ. मैं बता देता हूँ यहीं पे. So basically I told that this was a 3 expression without a 2 pi. यही 3 था ना, ये 3 expression था. So Yes, sir. I was telling basically the question was why the factor of 2 pi was included. 2 pi का factor क्यों आया? उसका 2 रीजन था. इसको हमने 2 तरीके से समझा था. The first method was, see, I told that what is the dimension of A star. A star का dimension क्या है? 1 upon meter का dimension है. और 1 upon meter का अगर dimension है
तो इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है कि ये हमारा 1/λ बन जाए, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। ओके भाई, लैम्डा भी तो मीटर में होता है ना। ओके, 1/λ क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? नहीं सर। नहीं लगाता। बट अगर हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, क्या अब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? सर के आई थिंक। वेव वेक्टर के। ओके, दैट यस मींस सर। जैसे ही हमने इसको 2 पाई से किया, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द 2 पाई बाय लैम्डा एंड यू विल गेट अ के वेक्टर, और के दैट इज वेव वेक्टर। एक तो ये है इसको समझने का तरीका। अच्छा, के वेक्टर मींस हम रियल स्पेस से कहां पहुंच गए? मोमेंटम स्पेस में पहुंच गए। और दूसरा तरीका, just for the study of periodic crystal, as I told you, crystal has been extended in the infinite manner. Just to study the periodic crystal in a complete one cycle of 2 pi, इसलिए हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, just for study of periodic crystal। ये दो तरीका था, इसलिए 2 पाई का इंक्लूजन हुआ था। ओके सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा, तो वहां से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यस सर। ओके, थैंक यू। अंडरस्टूड? यस ओके, सर। ओके, सी यू। थैंक यू। थैंक यू, Thank you so much, sir. थैंक यू।